Hello, my dear students, and welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Debnath. So, we are discussing chapter number 4, Pressure in Fluids and Atmospheric Pressure, from class 9th Physics syllabus. We have completed two of its lectures earlier, and both of those lectures are already uploaded in my channel. You can find them in a separate playlist in my playlist section. The name of the playlist is Pressure in Fluids and Atmospheric Pressure. So you will be easily getting the first two lectures. Now, make sure that you have watched those previous two lectures before proceeding with this third lecture. So get ready with your notebook, pen, and you will be taking down the notes as you always do and get your concepts clear. So today in this lecture, the topic that we would be studying is pressure in fluids. Okay. So what do we mean by fluids? Let us understand. Write down the definition of fluids. A substance which can flow, is called a fluid. That means any substance that can flow, which means what? All liquids. So all liquids can flow, isn't it? Water can flow, milk can flow, oil can flow, alcohol can flow. So they are all liquids and they can flow. So all liquids are fluids and gases can also flow. So all liquids and gases are fluids. जितने भी liquids हैं, जितने भी gases हैं, वो flow करते हैं, इसलिए वो fluid है. And a fluid exert pressure. A fluid exerts pressure at all points in the container in which it is kept. Suppose I keep in a container some water, then the the fluid water contained in the vessel is exerting pressure at all points and in all directions. So make sure you write this point. It is very important point that any fluid contained in a vessel exerts pressure at all points and in all directions. Now here there is a very important derivation that I will be discussing today itself. We are going to measure how much of pressure is exerted by a fluid column. Especially we will be discussing about a liquid column. How much of pressure is exerted. So आज का जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और तुम्हें काफी ध्यान से सुनना है. ठीक है, तो इस रिकॉर्डिंग को बहुत अच्छे से सुनना एंड देखो समझ में आ जाएगा. वेरी इजी. तो व्हाट वी हैव स्टडीड so far, that if we take any fluid in a vessel, that fluid would exert pressure at all points and in all directions. Now let us draw a diagram and understand how it works. Suppose you have a container, say a tall container like this, and it is filled with any liquid, say water. It is filled with water. यहाँ तक पूरा water है. ठीक है. Now, how do we know that this water is exerting pressure on the walls of the container? If I make a small hole here, I would be seeing that water comes out from this hole with some pressure, and hence this water was actually exerting pressure on the wall of the container, and hence this water comes out with some pressure. I can feel the pressure. If I keep my hand over here, if I keep my hand over here, I will be feeling that there is a pressure. Okay. And if I make a small hole below this hole, then I would be seeing that the pressure is more in the lower hole. And if I make another hole, then I would be seeing that pressure is even more in the third hole, the lowermost hole. तो एक चीज तो एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया
कि ज्यादा प्रेशर कब होता है, जब हम डेप्थ इंक्रीज करते हैं। जितना ये दिस इज नोन एज डेप्थ, है ना। अगर ये सरफेस है हमारा, तो सरफेस से जो डेप्थ है, वो डेप्थ अगर इंक्रीज हो रहा है, यू सी इन द फर्स्ट केस द डेप्थ d1 was this distance for this hole. For this, say the hole is, let me name ABC. For the hole A, the hole A is at a depth of d1. The hole B is at a depth of d2, and the last hole, the third hole, is at a depth of d3. तो d3 सबसे ज्यादा, isn't it? उससे थोड़ा कम d2, and the d1 is the smallest depth. So as the depth increased, the pressure also increased. So depth ज्यादा होगा तो pressure ज्यादा होगा। अब फिजिक्स में हम डेप्थ ना बोलकर उसको क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। डेप्थ को ही हम इस तरह से सोच सकते हैं, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टर्म, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ठीक है, अभी तुम इस तरह, अगर तुम सरफेस के नजरिए से देखोगे, तो ये तो सरफेस से कितने नीचे हम जा रहे हैं, इसलिए हम उसको डेप्थ बोल रहे हैं। लेकिन इफ इंस्टेड ऑफ कॉलिंग referring it from the surface, if I would measure the same distances, the same depths, not from the surface but from the hole, तो मैं अगर होल से स्टार्ट करूंगा, ये होल है और ये मान लो रेफरेंस लाइन है इस होल का, तो ये होल से कितने हाइट पर है, होल से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ये जो लिक्विड है ना इसके ऊपर, दिस इज द लिक्विड, दिस इज द लिक्विड, इजंट इट? एंड ये जो मैंने अभी शेड किया, दिस इज द लिक्विड कॉलम। तो ये जो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है, दिस इज द सेम थिंग विच आई वॉज रेफरिंग टू d1 अर्लियर। अब से मैं इसको ऐसे बोलूंगा, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, क्योंकि ऐसे ही हम इसे कन्वेंशनली बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट डेप्थ, we will be measuring the distances from the place where I want to know the pressure of. तो जिस जगह का मुझे प्रेशर चाहिए, उस जगह से मैं हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम को लूंगा। नाउ यू सी द सेकेंड वाला जो होल है, उसके लिए हमारा जो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम हो जाएगा ये वाला। तो मैं इस लिक्विड कॉलम को शेड कर दिया, तो जो ग्रीन कलर का जो लिक्विड है वो हो गया लिक्विड कॉलम। द ग्रीन पोर्शन of the liquid is the liquid column, and whatever height is this liquid column is having, उसको मैं बोलूंगा height of the liquid column for this second hole, and third वाले के लिए this would be the height of the liquid column। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम किसको बोल रहे हैं। इनफैक्ट इट इज द डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये हो गया फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस से मेजर करूंगा तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तब डेप्थ बोलूंगा। लेकिन अगर मैं होल से मेजर करूंगा तो ऊपर की तरफ मैं लूंगा फ्री सरफेस तक, तब उसको हाइट बोलूंगा। हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन ज्यादातर समय हम उसे क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। नाउ दिस फिगर ऑल्सो मेड इट क्लियर कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मीन्स इफ द डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस इंक्रीजेस, इन अदर वर्ड्स the height of the liquid column increases, then what happens, liquid pressure increases, क्योंकि तुमने देखा कि नीचे वाले होल में ज्यादा प्रेशर से लिक्विड निकल रहा था। सो इस चीज को यहां पे अब लिख दो, इट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिक्विड प्रेशर। And why only liquid pressure? It is any fluid pressure, it can be gas also. But since specifically we are discussing for a liquid in this experiment, I am writing liquid pressure. It is actually any fluid pressure. It can be gas also. Liquid pressure increases with increase of depth below the free surface. या तो तुम ऐसे बोलो, increase of the depth below the free surface, या फिर तुम इस पर्टिकुलर चीज को, डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस को ऐसे भी बोल सकते हो,
पूरे सेंटेंस को यहां तक ऑफ तक तो सेम ही रहेगा। अब डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस को मैं बोल सकता हूं हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, दैट इज एक्चुअली द डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस, जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। एंड दोनों मीनिंग सेम ही है। You either write liquid pressure increases with increase of depth below the free surface, or you write liquid pressure increases with the increase of height of the liquid column. Both are same. अब हमें क्या करना है, जो डेरिवेशन हम करेंगे, सपोज ये लिक्विड है, ये कंटेनर है, इसके अंदर एक लिक्विड है, एंड सपोज आई वांट टू नो दैट let us take a let us take an imaginary area, a surface area somewhere inside the liquid. If I want to know that in this particular area what is the pressure exerted due to the liquid column. अच्छा, एक चीज तुम लोग सोचो, मैं यहाँ दो इमेजिनरी एरिया ले रहा हूं। से दिस एरिया इज A1, दिस एरिया इज A2. ओके, दिस इज सम एरिया, this is some area of inside the liquid. Now you people think that in which area, A1 or A2, the pressure will be more, the pressure due to the liquid will be more. Obviously A2 में pressure ज्यादा होगा, pressure at A2 will be more than the pressure at A1. Why? Because the height of the liquid column above A1, ये जो A1 के ऊपर height of the liquid column है, means H1 is smaller, but the height of the liquid column over A2, which is H2, which is referred as H2, is more. तो कौन सा height ज्यादा? Height of the liquid column H2 ज्यादा है H1 से। तो ये height जितना ज्यादा उतना ज्यादा pressure। अब मैथमेटिकली इसको हम प्रूव करने वाले हैं, और हम ये भी अभी देखने वाले हैं कि कितना प्रेशर, हाउ मच ऑफ, इतना तो समझ गए कि द प्रेशर एट A2 इज मोर देन प्रेशर एट A1. नाउ आई एम गोइंग टू मेजर हाउ मच ऑफ प्रेशर इज देयर एट दिस A2 एरिया एंड हाउ मच ऑफ प्रेशर इज देयर इन A1. तो बेसिकली अभी हम जो करने वाले हैं वो है, वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मेजरिंग प्रेशर exerted by a liquid column. This liquid column is exerting how much of pressure in a particular area inside a liquid. Now what is liquid column in this case? अभी मैं समझाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं चिल्ड्रन, मैं किसी भी एक एरिया को मिटा दिया, let me just concentrate on only one of the areas, only one of the surfaces, this one. अगर मुझे मेजर करना है how much of pressure is exerted on this area due to this liquid column, I am not going to consider the entire liquid which is on this area, rather the specific liquid column which is on over this area. मतलब अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से इसको कंप्लीट करूं, इसका वर्टिकली स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करूं, तो मुझे यहां पर एक सिलेंडर मिलेगा। नीचे तो ऑलरेडी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ऊपर में भी मुझे एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा, एंड वी आर obtaining a cylindrical portion of the liquid, and this cylindrical portion of the liquid is exactly that liquid which is exactly on this area. If you see the liquid over here is not vertically above this area, but if you see the liquid which I have shaded with green, that entire liquid is exactly on this area, so this area whose pressure we are going to measure is actually due to the pressure exerted by this liquid column. मतलब ये जो शेडेड पोर्शन ऑफ द लिक्विड है, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ द लिक्विड जो मैंने अभी यहाँ पे शेड किया, उसके वजह से इस एरिया पर प्रेशर है, क्योंकि यही लिक्विड है जो इसके एग्जैक्टली ऊपर में है, इस एरिया के ऊपर में है। तो इसका जो हाइट होगा, उस हाइट को मैं बोलूंगा हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। और अब हम निकालेंगे कि हाउ मच ऑफ प्रेशर इज exerted due to this liquid column on this area.
this green liquid column, green जिसको मैंने green से shade किया, that green colored liquid column is exerting how much of pressure on this area. This we are going to measure now. We are going to derive an expression for this. ठीक है? Give the heading, and this derivation is very important. Write down pressure exerted by a liquid column. यही हम निकाल रहे हैं, liquid column ने कितना pressure exert किया. Now here let us draw a diagram. जो diagram मैंने अभी बनाया था, अब उसको थोड़ा सा अच्छे से सुंदर से बनाते हैं. Let us draw a container first. This container is containing some liquid. It is a straw containing any liquid. And let us say we are talking about this area, a circular cross section. If you look at this area from the top, it would appear to you as a circle. लेकिन मैं साइड व्यू बना रहा हूं तो इस तरह का मुझे एक बनाना पड़ रहा है. But this is actually from the top, it is a circular cross section. Rather, if you don't understand nicely, you can draw it like this. It has a circular cross section. I'm making it oval क्योंकि मैं साइड व्यू बना रहा हूं. एंड इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो लिक्विड है एग्जैक्टली वर्टिकली अबव, तो उसका मैं एक इमेजिनरी पोर्शन लाइन से क्लियर कट बना ले रहा हूं. सो दिस इज अ सिलेंडर. नाउ दिस सिलेंडर is this water which is represented by this cylinder is actually that water or that fluid which is exerting pressure on this area. This is the area जिसका प्रेशर मुझे निकालना है. लेट अस नेम दिस PQ और इसका RS, क्योंकि मुझे अब डेरिवेशन करना है तो नाम देना पड़ेगा. मैंने PQ RS दे दिया. लेट दिस हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम बी H. दिस इज द लिक्विड. And let us consider that the density of this liquid is rho. Let us say liquid of density rho. Rho is actually a symbol. Any symbol can be used, but generally for density we use the symbol rho. कोई भी symbol use कर सकते हैं. तो ये है rho. Rho is liquid का density. अब हमें निकालना है कि इस PQ surface पे कितना pressure हो रहा है, कितना pressure exert हुआ है. So let us write down what we have drawn. Let us explain it in words. Consider a vessel containing a liquid of density rho. And this liquid is stationary. So in order to calculate what we are calculating, children, in order to calculate pressure, we are calculating the pressure at a depth of, कितना डेप्थ है, फ्री सरफेस से लूंगा तो डेप्थ बोलूंगा. कितना डेप्थ है, H इज द डेप्थ. या फिर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम बोलूंगा तो भी H ही है. सो एट अ डेप्थ ऑफ H. नाउ फॉर दैट वी आर कंसिडरिंग, सो कंसिडर a horizontal circular surface, a horizontal circular surface PQ of area A. ये जो PQ है ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक सर्कुलर सरफेस है. सर्कुलर क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है. अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ये सर्कल दिखेगा तुम्हें. उसका एरिया क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस PQ surface? Area is A. ठीक है? Which is at a depth of H. At depth H from the free surface SR. From the free surface SR. तो ये जो SR है ये free surface of the liquid. Very very simple. हमें निकालना है, पहले मैं निकालता हूं कि थ्रस्ट कितना लग रहा है, क्योंकि प्रेशर तो मुझे निकालना ही है. आई एम गोइंग टू कैलकुलेट प्रेशर, एंड प्रेशर इज एक्चुअली थ्रस्ट अपॉन एरिया. एरिया तो मुझे ऑलरेडी पता है, ए है एरिया. अगर मुझे थ्रस्ट पता चल गया तो मैं थ्रस्ट डिवाइडेड बाय ए कर दूंगा तो प्रेशर आ जाएगा अपने आप. सो आई एम नाउ फोकस्ड ऑन कैलकुलेटिंग द थ्रस्ट ऑन PQ. इस PQ पे कितना थ्रस्ट लग रहा है, पहले उसको निकालते हैं. द थ्रस्ट
Thrust means perpendicular force exerted on the surface PQ. PQ पे कितना thrust लग रहा है? Thrust on any surface is actually the weight. अगर प्रीवियस लेक्चर ध्यान से देखियो तो लेक्चर 1 में ही मैंने बताया है कि thrust exerted on any surface is actually the weight of the body on that surface. तो PQ पर thrust कितना, जितना इस लिक्विड कॉलम का वेट है, क्योंकि PQ के ऊपर एग्जैक्टली कौन सा बॉडी है, इस PQ सरफेस के ऊपर कौन सा बॉडी है, द बॉडी इज दिस लिक्विड कॉलम विच आई हैव जस्ट शेडेड. तो उस लिक्विड कॉलम का जो वेट है वही है थ्रस्ट. सो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द लिक्विड कॉलम? अभी अभी हमने नाम भी लिखा है PQRS. दिस PQRS सिलेंडर रिप्रेजेंट्स द लिक्विड कॉलम. तो उस लिक्विड कॉलम जिसका नाम है PQRS, उसका वेट. अब वेट क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी गिव्स मास एंड मास इंटू जी गिव्स वेट. यानी तुम जानते हो कि वेट फिजिक्स में पढ़े भी होगे, वेट इज mg, w इज mg, यानी वेट ऑफ अ बॉडी इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड मास इज नथिंग बट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. कैसे? क्योंकि क्लास 6 में पढ़े होगे डेंसिटी का डेफिनेशन, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. क्लास 6 में पढ़े होगे डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. एवरीबडी मस्ट नो इट, क्लास 6 में है ये, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास को मैं लिख सकता हूं इसी फॉर्मूला से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकता हूं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो यहां पे इस वेट के जगह पहले तो मैं लिख दूंगा मास ऑफ लिक्विड कॉलम PQRS. वेट इज मास इंटू जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि W इज mg. तो वही मैंने लिखा, वेट के जगह पे अब मैंने mg लिख दिया, मास ऑफ दिस लिक्विड कॉलम इंटू जी. और मास के जगह पे अब आगे क्या मैं लिख सकता हूं? मास के जगह पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, कि मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम PQRS into density of this liquid, density of the liquid, and into this G is already there, which is the already in the previous step. अभी हमें क्या मिला? Volume of the liquid column PQRS is PQRS for volume into density into G. और ये जो लिक्विड कॉलम PQRS है, इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये PQRS एक सिलेंडर है, isn't it? This PQRS is a cylinder. So basically we are looking for the volume of the cylinder PQRS. A cylinder का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? What is the formula for volume of a cylinder? It is pi r square h. अगर नहीं जानते हो तो अभी जान लो. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो फॉर्मूला होता है दैट इज pi r square h, and pi r square is basically area of the circle. Pi r square is PQ जो सर्कल है, PQ is a circle, isn't it? ये तो सर्कल है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और सर्कल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर. तो ये जो पाई आर स्क्वायर ये एरिया ऑफ सरफेस PQ है, एंड इनटू दिस H. तो इसीलिए मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के जगह पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि दिस इज द एरिया ऑफ द सरफेस PQ इनटू H, दिस हाइट H, which is actually the formula for volume of cylinder. तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर PQRS के जगह में वॉल्यूम हमेशा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट. ये एक बेसिक फॉर्मूला मैथ्स होता है. मैथ्स का एक बेसिक फॉर्मूला है मेंसुरेशन चैप्टर का, कि वॉल्यूम ऑफ एनी 3D सरफेस इज यूनिफॉर्म 3D सरफेस इज एक्चुअली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट. तो वही यहां पे भी मैंने किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा PQ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सो एरिया ऑफ द सरफेस PQ इनटू द हाइट. और यहां पे बाद में क्या है? डेंसिटी. डेंसिटी मींस रो. अब सिंबल यूज करो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हमने रो से डिनोट किया था, और यहाँ जी है. और एरिया को मैं अब किस सिंबल से लिख सकता हूं? ए, क्योंकि एरिया इज ए. एरिया ऑफ सरफेस PQ इज ए इंटू H इंटू रो इंटू जी. ये जो AH रो जी मुझे मिला, दिस इज द थ्रस्ट. और अब मुझे प्रेशर चाहिए, तो मैं
एरिया से डिवाइड कर दूंगा, थ्रस्ट मिल गया. सो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सरफेस PQ इज एक्चुअली दिस थ्रस्ट जो मुझे मैंने निकाला AH रो जी डिवाइडेड बाय एरिया. प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया. ए कट गया एंड वी आर लेफ्ट विथ H रो जी. यही है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी जो हमने आज के क्लास में जो डिराइव किया है, दैट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस inside a liquid is actually H rho g. H means the height of the liquid column above it multiplied with the density of the liquid. Rho is the density and g is the acceleration due to gravity. This you have to remember really well. So finally हमने क्या formula derive किया children? Pressure P at a point inside a liquid due to the liquid column. Due to the liquid column. लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर, इट इज एक्चुअली इक्वल टू एच रो जी. बार बार इसको बोलो एच रो जी, एच रो जी. एंड एच इज व्हाट, सिंबल्स भी पता होना चाहिए मीनिंग. हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट. जिस पॉइंट का हम प्रेशर निकाल रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर कितना लिक्विड कॉलम है उसका हाइट मल्टीप्लाइड विथ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड विथ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एच रो जी. अगर ध्यान से देखो तो इस PQ के ऊपर एयर भी है, इजंट इट? यहाँ पे एयर है. तो अगर टोटल प्रेशर मुझे निकालने के लिए बोलेगा कि PQ पर टोटल प्रेशर कितना है, तो सिर्फ इस लिक्विड की वजह से है एच रो जी, लेकिन एयर भी तो है, एयर का प्रेशर भी तो इस पे लग रहा है, तो वो उसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा. मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एडेड हो जाएगा. सो इफ समबडी आस्क्स मी टू गेट द टोटल प्रेशर इन अ लिक्विड at a depth of h, at a depth of h, टोटल प्रेशर, तो ये एच रो जी तो होगा ही जो लिक्विड के वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ. एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एडेड होगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय P नॉट. P and the zero is written P naught plus H rho g. This P naught is basically the atmospheric pressure, which is generally 10 to the power 5 Pascal. इसका ये कांस्टेंट होता है. हम ऐसे तो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हायर ऑल्टीट्यूड में डिक्रीज करता है, लोअर ऑल्टीट्यूड में इंक्रीज करता है, बट हम न्यूमेरिकल्स में एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं. वी जनरली टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी 10 to the power 5 Pascal. And H rho g is what? This is the pressure due to the liquid column. Pressure due to the liquid column, जो इसको हमने अभी डिराइव भी किया, due to the liquid column. This very very important formula we have derived. अब इसको हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम यूज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा. सो आज हम यहीं तक करते हैं. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट and press the bell icon next to it. Also click on the like button to keep me motivated and to support me. Thank you all of you. Take care and God bless you children.